Okay, today we are solving this question. अगर इसमें इसको एक ट्री की तरह एज्यूम करूँ तो मतलब ग्राफ की तरह एज्यूम किया है। Okay, what we can do, करंट का लेफ्ट, अगर करंट का जो लेफ्ट वो प्रेजेंट हुआ ठीक, तो क्यू में तो पुश कर दिया, लेकिन उसके साथ में हम क्या करेंगे, उसके साथ में वेटेड में डाल देना चाहिए क्या कि नहीं, वेटेड में भी डाल दो। वेटेड में भी अपन उसके करंट की लेफ्ट की वैल्यू डाल देंगे। करंट की जो लेफ्ट की वैल्यू है लेफ्ट की वैल्यू डाल दी, पहले लेफ्ट को चेक किया, काउंट को चेक कर लिया कि पहले से करें। सेम कंडीशन, दिस सेम कंडीशन विल बी फॉर राइट। ओके, यहाँ पे चेंज करना है बस, यहाँ पे राइट, जो करंट का लेफ्ट है उसकी जगह पे क्या करना है राइट, और यहाँ पे गलती नहीं हुई, ठीक है। तो करंट का यहाँ पे राइट देख लेंगे, और जो करंट के राइट की वैल्यू है, ठीक, ये दो कंडीशन होंगे लेफ्ट रूट के लिए, राइट रूट के लिए। हमें जाना है कहाँ पे, इसको तो ले जाओ पहले एक नए उस पे, इसको एडिट कर सकते हैं क्या, वेट, इसमें से इस फोटो को हम ले जाएंगे काय पे, अरे भाई नीचे आना, इस पे ब्राउजर पे रखना, उस फोटो कहाँ है ये, आजा भाई फोटो, ठीक है। अब इसको करेंगे एडिट, एडिट कर सकते हैं कि नहीं यार, एडिट करने का भी ऑप्शन नहीं है यार इसमें तो। ओके, क्यों मैं बस कर दिया है, वेट, क्यों मैं बस कर दिया है, ये लेफ्ट के लिए कंडीशन हो गई, एक राइट के लिए, लेफ्ट के लिए हो गई, राइट के लिए हो गई, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। अरे भाई ये क्या है, लेफ्ट के लिए, लेफ्ट रूट, ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड, हाँ ये लेफ्ट चाइल्ड के लिए हो गई, ये हो गई है क्या, now this condition for the right child, okay, both the condition are good but we have also one condition। अभी हमने इसको मैपिंग कर ली है ग्राफ की तरीके, मतलब 3 की मैपिंग हो गई 1 से और 3 की 10 से। इसको इस टाइप से देख सकते हैं, 2 मिनट रुकना, इसको मैं ओपन या गो फोटोज में कैसे कौन करूँगा, रुकना, हाँ अब होगा ये ओपन, अब होगा ये ओपन। यहाँ से मैंने मैपिंग कर ली, यहाँ से इसकी इस साइड, अरे यार इसको पहले,
सेव कर लो इसको, सेव 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 सेव। नो 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 नो। इसकी जगह पे अगर मैं और इसमें लेफ्ट में अगर लेफ्ट वाले को डाल दिया, राइट वाले को डाल दिया, अगर इसके पेरेंट को नहीं डालूंगा तो फिर क्या हो सकता है? देखता हूँ। इसके लेफ्ट को डाल दिया, राइट को डाल दिया, पेरेंट को भी ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता। ये कहाँ से आया भाई? ये क्या था? वाइल लूप यहाँ से शुरू हुई, वाइल लूप यहाँ पे खत्म हो जाएगी, और ये कहाँ का है? अंदर वाली वाइल लूप का, ठीक है। तो अंदर वाली वाइल लूप के लिए एक और कंडीशन आ जाएगी जो हमने अभी मैपिंग की है यहाँ पे। ये अनऑर्डर्ड मैप बना के कनेक्ट किया है, जो करंट रूट है उसको उसके पेरेंट से कनेक्ट किया है। मतलब एक नोड से हम 3 जगह जा सकते हैं। फर्स्ट उसका लेफ्ट चाइल्ड, सेकंड राइट चाइल्ड, एंड थर्ड उसका जो रूट मतलब उसका जो पेरेंट है, करंट नोड का भी जो पेरेंट है वहाँ पर भी। तो एक टाइप से ग्राफ की तरह एज्यूम कर सकते हैं। तो पहले वाले बीएफएस में क्या 1, 10 और 6 को विजिट करेंगे, देन उसको दोबारा से बीएफएस कॉल करेंगे 1 के लिए, तो 5 विजिट हो जाएगा। इन दोनों में कोई है ही नहीं, तो इनको ये डायरेक्ट क्यू से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद 5 के लिए 4 और 4 के लिए 2 बार 9 और 2, तो एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, और एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, 4 टोटल 4 बार बीएफएस कॉल होगा। तो वही उनको पता करना है। अब 2 तो मैंने कर दिए हैं कि यहाँ पे लेफ्ट वाले चाइल्ड को क्यू के अंदर की कंडीशन राइट वाले चाइल्ड की डाल दी। अब आती है कंडीशन उसके पेरेंट की। पेरेंट की कंडीशन, पेरेंट की कंडीशन, पेरेंट एक जो उसका पेरेंट है मतलब कि करंट रूट है, और हमने अभी जो मैपिंग बनाई है, मैपिंग ऑफ जो करंट है मतलब मैप ऑफ करंट, इस मैपिंग ऑफ करंट इसका क्या आंसर आएगा? जो उसका पेरेंट है, मतलब जैसे मैंने 3 से स्टार्ट किया, तो जो 3 का पेरेंट है, 3 का पेरेंट क्या है? 1 है, 3 का पेरेंट आ जाएगा, ठीक है। नाउ आई हैव टू डू दिस, ओके, एंटायर स्क्रीन। नाउ इसको दूसरे उसमें खोलते हैं और इसको एडिट करते हैं। इधर एडिट नहीं हो पाए, हो जा भाई एडिट। मोर टूल्स में जाके हो सकता है क्या? नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको 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 अरे भाई फोटोज कहाँ गए मेरे? डाउनलोड भी तो कर लिया ना, इमेज तो करने। हाँ, ओके। अब जो मैप ऑफ करंट है, अब इसको मैं इस टाइप से समझा रहा हूँ, देखना। देखो, अब जैसे कि इस वाले में एडिट का ऑप्शन है ना, हाँ है, दाएं तो एडिट। जो मैप ऑफ करंट है, ठीक, तो मैप ऑफ करंट क्या शो कर रहा है? जैसे मेरे पास एक वैल्यू है 3, तो 3 का मैंने लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल कर दिया, ठीक, करंट का लेफ्ट। एक करंट के लेफ्ट के लिए एक कॉल हो गया, ठीक। एक करंट के राइट के लिए मैंने यहाँ पे एक कॉल मारी थी, करंट के राइट के लिए, ठीक। अब मेरे को कॉल मारनी है जो करंट वाली वैल्यू मतलब जो 3 है, इसका अगर मैं पेरेंट देखूँ तो इसका पेरेंट हमें कैसे पता चलेगा? इसका जो पेरेंट है वो 1 है, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमने जो अभी मैपिंग बनाई है जस्ट अभी, उस मैपिंग में जैसे कि मैंने बोल दिया कि जो अभी करंट है सी, करंट का जो क्या बोलते हैं, मैप में इस करंट को देख लो, ठीक। तो मैप में हम देखेंगे इस करंट को, तो ये वैल्यू आ जाएगी क्या? 1 के इक्वल, ठीक। मैप में करंट देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमें इससे हमें ये हो जाएगा कि 3 का जो पेरेंट है वो 1 है। अब इसको 3 के पेरेंट का पता चल गया, तो मैप ऑफ करंट, ठीक,
पहले तो ये चेक करें क्या उसका पेरेंट है कि नहीं, क्योंकि अगर जो रूट नोड है यहाँ पे जो सबसे पहले अपन ट्राई करेंगे बन, तो इसका पेरेंट तो कोई है नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि एमपीओ करेंट प्रेजेंट है क्या। अगर प्रेजेंट होगा ठीक, देन उसके बाद एक कंडीशन क्या लगाएंगे कि वो हमने उसमें विजिटेड है कि नहीं। तो ठीक, पहले चेक करेंगे क्या, विजिटेड डॉट काउंट विजिटेड मैप ऑफ करेंट, वो विजिटेड और काउंट पहले से विजिटेड है कि नहीं। तो पहले से विजिटेड भी नहीं होना चाहिए ठीक, पहले से विजिटेड नहीं है तो हम क्या करेंगे, और हो गया ना ये, दो ही चेक करना है इसमें जो उसके पेरेंट, उसके लिए सिर्फ दो ही कंडीशन बन सकती हैं कि और भी बन सकती हैं। आई थिंक दो ही कंडीशन बन सकती हैं मैक्सिमम, कि चेक करेंगे पहले कि वो प्रेजेंट है कि नहीं और मैप में है कि नहीं। आई थिंक हाँ यही होनी चाहिए, वैसे ऊपर भी दो ही दो कंडीशन हुई है ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको क्यू में क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, क्यू में पुश कर देंगे क्या, मैप ऑफ करंट, मैप ऑफ करंट को ठीक, मैप ऑफ करंट उसमें, लेकिन हमने क्या जो मैप ट्री नोड था ना, हाँ तो क्यू में पुश कर दिया ट्री नोड। लेकिन इसमें जो मैप ऑफ करंट नोड है और इसमें हमने विजिटेड वेक्टर लिया है, वो वेक्टर नहीं विजिटेड जो है हमने लिया, कहाँ पे लिया, कहाँ गया, नीचे है हाँ, ये विजिटेड तो सेट है वो भी इंटीजर टाइप का। तो हम यहाँ पे मैप ऑफ करंट है ना, इसको क्या करेंगे, इसको पहले इसकी वैल्यू चेक करेंगे, मैप विजिटेड काउंट ठीक। तो जो हमारे सेट है, सेट में इसकी वैल्यू हमने फर्स्ट चेक की, सेट में भी नहीं है तो हमने क्या क्यू में डाल दी इसको नोड को ठीक। क्यू में डालने के बाद बस वेटेड में क्या कर देंगे, उसको इंसर्ट कर देंगे ताकि दोबारा से जब बी एफ एस कॉल हो तो ये दोबारा से एक्सेस ना हो ठीक। वेटेड में क्या होगी, एम पी ऑफ करेंट, एफ ऑफ करेंट की वैल्यू ठीक। एक कंडीशन हो गई, दो कंडीशन हो गई, तीनों कंडीशन हो गई, ये अंदर वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब एक बार तो चल गई वैल्यू तो, लेकिन अपन क्या करेंगे यहाँ पे आंसर प्लस प्लस कर देंगे हर बार, क्योंकि यहाँ पे हमें तो आंसर निकालना है, मतलब ये पता करना है मतलब कि कितनी बार अपना बी एफ एस कॉल हो रहा है। मतलब यहाँ पे देखो एक बार ठीक, अब यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे पहले जो थ्री है, थ्री से हमें स्टार्ट करना है, इन्फेक्ट करना है इन सबको। थ्री पहले इन्फेक्ट करेगा वन को, वन को देन टेन को देन सिक्स को, मतलब पहले वाले बी एफ एस में ये तीनों कवर हो जाएंगे ठीक। बी एफ एस को मैं यहाँ पे बी से लिख देता हूँ, बी एफ एस वन ठीक। अब सेकंड वाले बी एफ एस में क्या वन है, वन इसको करेगा तो सेकंड वाला हो जाएगा क्या, बी टू, तो बी टू में हो जाएगा एक बार पाँच हो जाएगा कवर ठीक। अब इन दोनों के कोई भी मतलब कोई चाइल्ड नहीं है तो इनके लिए तो ये डायरेक्ट ही क्यू से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आता है फाइव, तो फाइव क्या करेगा, बी एफ एस कॉल करेगा तो फाइव का जो मतलब कि फाइव से कौन कौन कनेक्टेड है, वन, वन लेकिन ऑलरेडी विजिटेड है तो इस पे नहीं जाएंगे। अब कौन विजिटेड नहीं है, फोर, तो फोर पे जाएंगे तो बी थ्री, एक बार और बी एफ एस यहाँ पे कॉल हुआ तो बी थ्री तीन बार कॉल हो गया ठीक, क्यू में चार पहुँच गया। अब चार पे जब कॉल करेंगे तो चार के दो अनविजिटेड नोड, मतलब वो नोड से कनेक्ट है, नाइन टू, फाइव तो ऑलरेडी है इसलिए नाइन टू के लिए बी एफ एस कॉल हुआ तो बी ऑफ फोर, तो मतलब टोटल कितने बार कॉल हो रहा है, फोर बार। और यही हमें फाइंड करना है कि हाउ मैनी, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टाइम बताना है, अमाउंट ऑफ टाइम बताना है पूरा इन्फेक्ट ठीक। तो हमने पहले जीरो से इनिशियलाइज कर दिया था, यहाँ पे प्लस कर दिया था और लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। और आई थिंक हो जाना चाहिए वैसे। क्या दिक्कत आ रही है, क्यू डॉट नॉट एम्प्टी, ओह यहाँ पे आई है, किसने हटा दिया पैरेंथेसिस, I got disconnected, but okay, I'm back man. Okay. Am I audible? I think. Next question, yeah. Now look at this sheet. Next question is
count total nodes in a binary tree. You have to tick this and we completed this minimum time taken to bind the binary tree from the given node. Okay. Now we next question is count total nodes in a complete binary tree. Okay. Total nodes in a complete binary tree now. Okay. Now search for this question. Total node in a complete binary tree. You want total nodes in a binary tree. Okay, I think screen is not sharing somehow. I think होना चाहिए स्क्रीन यार. स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है? Can I reshare it? Okay. Now I am selecting the entire screen again. Okay. Is it visible now? Okay. That comes out to be. Now count complete tree nodes. Given a root of the complete binary tree, return the number of nodes in a tree. Here, every level except for the last level is completely filled in a complete binary tree, and all the nodes in the last level are as far as possible. It can have between 1 and 2 to the power h nodes inclusive at level h. Design algorithm that run less than, oh my god, less than order of n time complexity. Mm, we have to find the nodes. Complete. Mm, every level except possibly last is completely filled in a complete binary tree. All the nodes in the last level are as far as possible. It can have between 1 to 2 to the power h nodes. Now the height is 2. Now see the brute force for this question. Okay, brute force. भाई मच्छर है यहाँ पे. Okay. Now to count the total number of nodes means I have to return the my solve function that I usually write. Okay. Now here and solve and node star root oh my god root equals to null. And what I have to do, I have to return 0, otherwise 0. Left and right plus 1. Okay. Now this return also 1. Okay. Now this left 1, right 1, then 1, 3. Okay. Now this will return 3. This will return. Okay. Now open this. How can I open this? Okay. Can I do this in? No, this is not a binary tree, so I think I have to do this. Okay. Can I? I cannot edit this way, but can you imagine if I have 1, 2, and 4 and 5?
If I call the current, if I am here, okay, at the 40. Now what will first, it will go in its right or left. If it go in its left, then there is no node in its left. So 0 will be returned from left, and from right also 0. So put 4, 0 plus 1 means there is one node. Can I write this? Means I have to return the uh, what solve function for root का left, okay, और solve function for root का right, okay, plus 1. It work. Oh, I think it should work. Okay, yeah. We wait for okay. If there are n number of nodes in a binary, okay, what will be the time complexity? We are calling the function root, okay. It is calling the left and it is calling the right, okay. If there are n nodes in a binary tree, then it will call the n times left and n times for right, means n plus 1, n plus n 1 up to n. So the time complexity for our the to design algorithm that run in less order of n times. You have to find less than order of n complete binary tree. We have to find the number of nodes less than n time. Can we find it first? Is it right or not? First submit it. Okay. Validate. It is executing. Hide this. So, my God, what happened? This implementation uses standard recursive DFS that waits every node, resulting in worst case runtime of order of n. Okay, you have design algorithm. Okay, order of n times if the order of n times number of node 10 to the power 5 into 10 to the power 4. Okay, I understand, but what I have to do now, I think count total number of nodes. If I am here, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, no, 4 and 6. If I have to count total number of nodes. If I try BFS, then what you can do, it will also take order of n time. This will should pass. This will constrain design will less than order of n time. Less than order of n time. Topics binary search. I'm thinking about binary search. But how? I think binary search an answer. No. Mm, if there are if the one corner root, okay, there are three levels. Only are three levels. How can we apply binary search on tree? That is so complicated. लिटरली मैंने इसको आज ही पहली बार देखा कि बाइनरी सर्च किसी ट्री पे भी अप्लाई होती है। ओके, इसको
फाइंड करने के लिए 1 2 3 4 है, 5 इसका लेफ्ट 6 है। तो अगर मैं बोलूँ कि हर वैल्यू छोटी है, ये तो हो ही नहीं सकता है कुछ। बाइनरी सर्च हर एक वैल्यू पे जाना ही पड़ेगा, जैसे कि हर एक वैल्यू पे तो कैसे भी जाना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ नोट्स निकालने के लिए। टोटल नंबर ऑफ नोट्स बाइनरी सर्च will work. Okay. Available type of vanity, complete vanity university. Available except possible last level completely filled. And it can have 1 2 to 3 power as node at the last level. ओके, लास्ट लेवल में 2 टू द पावर एच तक नोड हो सकते हैं, 2 टू द पावर एच तक। ओके, एच हो जाएगी इसकी हाइट। हाइट फाइंड करने की हाइट यहाँ पे 2 है, 2 टू द पावर 2 मतलब 4। ठीक, तो 4 टू 6 एक 7, 3 to 5 or 6. What I can do, I can apply the PFS, but it will also take the root. So I'm just using, but what it can wait. If I say count of tree root node root, we have only root. We have to find the smallest value less than or equal to root. Okay, we have find the 2. The if we go on the left, by root less than or equal. How can I apply binary search? Let's see this. How can I apply? Binary is applicable on tree, but only the tree is specially structured a binary search tree. It is for only binary search tree. Then how can I apply the left all the nodes left of tree must have evaluated? Tree can lead to the state line. In the worst case scenario, the term complexity order of n. In complete binary tree को find करना, completivity में भी apply हो, no, binary search is not directly applicable to complete binary tree. Property not value. Structure मतलब a complete binary require every level to completely fill except the last level, which must be filled from the left to right. Okay, idea. It is filled from left to right 1, then 2, then 3, then 6, then 5. I can write if there are 2
the n h total h height into how many nodes in a 2 to the power h. Okay, to h into 2 to the power h. Okay, now the number of nodes in a tree is 5 into 10 to the power 4. Okay. Now if I take log of 5 into 10 to the power 4, then 4 log 50. 4 log 50 is, now it comes out to be 4. Okay. Now max level 4. If they are max level 4 and the height to the power 4. Okay. One level, second level. If I try BFS for this, now see the topic. Binary search bit manipulation and when BFS, I cannot try BFS for this. BFS and here also the BFS. No, if I try this 3, here height of the put 3 into 2 to the power height 3 to the power 3. Height in total हो जाएगा height into 2 to the power. Okay. No value. Searching a random complete binary tree requires checking every node. Makes the education common type of binary tree is a heap which holds the heap with specific value relationship. How to make binary type DCA? Can I? There are delete this element. Okay, if we delete this element, then 6 will take it. Time complexity of deleting. Complete binary tree. Time complexity depends whether a tree has only or include like heap or is complete or not. Unordered complete binary order of n. Complete binary tree organized as a heap. No. So if I delete the root element one by one, then it will also give the time complex order of n. So this method will also will not work. Property the gap left for the deleted node must be filled. You must locate every last node in a tree. No binary pay now. How can I apply the binary search? If there are if I have 1 and 2, I pan and 2, okay. How can I apply a binary search on this? Binary search. One and two, then three, then four. Okay. Total number of elements. If I say how many elements in a tree. A binary search tree, no.
Complete binary tree. Okay. I have complete binary tree and I've streamed it on. Okay. Now let's see the definition of complement. All nodes relative are H for H possible it can perfectly nearly complete, almost complete, nearly complete. That is good, but okay. I'm looking at this bulk. Now see the nodes. Yeah, complete one it and okay, it will give time complexity. We calculate the height for left. Height for left is very equal to height for left will be 1 and 2. Okay, 1 and 2. 1, 2, 3. Take. Now height for right will be also 3. Okay. If the height are same, then 2 to the power height 2 to the power 3 minus 1 to the 8 minus 1 equals to 0. But answer is 6. How what I can write? Okay, now 1 and 2. Perfect binary tree. Okay. Now, if they do not match, left height and 1 plus count of left. ट्री की हाइट कैलकुलेट करेंगे हम हर बार. Okay, how can we calculate the first? We calculate the height of the subtree.
यहाँ पे सब ट्री की हाइट आ जाएगी, यहाँ पर ये 2 हो गई, इसके सब ट्री की हाइट आ जाएगी 0, और एक 3, इसकी सब ट्री की हाइट आ जाएगी 0, ठीक, उसकी सब ट्री की, इसकी सब ट्री की हाइट आ जाएगी 1 2 0 2, इसके सब ट्री की आ जाएगी 3, इसकी सब ट्री की आ जाएगी ट्री, सब ट्री, सब ट्री। I'm gonna get the height of that. डबल नल हुआ तो रिटर्न करने में नल, लेफ्ट वाले को काउंट किया, राइट वाले को काउंट किया, टोटल आ जाएगा। मैंने लेफ्ट काउंट किया, लेफ्ट हाइट निकाली, करंट वाली की लेफ्ट हाइट निकाली, लेफ्ट हाइट रूट से राइट हाइट निकाल ली मैंने, ठीक, इक्वल आ गई लेफ्ट हाइट को टू राइट हाइट, टू 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 पावर लेफ्ट हाइट माइनस के बाद, ठीक, निकालेंगे काउंट ऑफ लेफ्ट रूट का राइट, ओके। Understand this question using the how can I solve this question? If anyone have any, how can I solve this using log and time? Okay, we try our brute force, but now we are trying our ChatGPT. सिर्फ उससे अप्रोच ही लेंगे, कोड नहीं। ChatGPT से भाई सब कुछ सीख सकते हैं अपन।
कंप्लीट वैलिडिटी तो वो ट्री है, तो यहाँ पे अभी लेवल कंप्लीट पर होता है, लास्ट लेवल बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक, ये तो जानते हैं लेवल 0 बोल है, लेवल 1 भी बोल सकता है, लेवल 2 है तो वो पार्शली फिल्ड है। ओके, नॉर्मल मेथड में तो मैंने ये कर दिया, ब्रूट फोर्स मार दी, लेकिन ये टाइम लेके ना ऑर्डर ऑफ है ना। ऑब्जर्व बाइनरी ट्री सपोज आई है 0 0 0 0 भाई 0 लेफ्ट 0 राइट 0 लेफ्ट ऑफ लेफ्ट 0 लेफ्ट ऑफ राइट 0 लेफ्ट ऑफ लेफ्ट 0 राइट ऑफ राइट 0। ओके, how many notes? Total notes 4 3 1 7। Take. Now total notes 7. Can we count? No. If height equals to 8, then node equals to, if height is 8, then how many nodes? 2 to the power 8 minus 1 means 2 to the power height is 3. 2 to the power 3 minus 1 equals to 7. Okay. Depending on the convention, subject और subtree है वो परफेक्ट है, बिटॉन ट्रैवर्स इट, तो हम उसको ट्रैवर्स ही नहीं करेंगे अगर वो परफेक्ट है सबट्री। जैसे कि इसका सबट्री परफेक्ट है तो हम इसको ट्रैवर्स ही नहीं करेंगे, इसका आ जाएगा, इसकी जो हाइट है, ठीक, परफेक्ट कैसे पता चलेगा, तो लेफ्ट हाइट है, राइट हाइट है, तो ये क्या परफेक्ट है, सबट्री परफेक्ट है तो ट्रैवर्स ही नहीं करेंगे। हाउ डू वी नो वेदर द सबट्री इज परफेक्ट? यही तरीका मैं लेफ्ट हाइट कैलकुलेट की मैंने, ठीक, 1 से 2 पे 4 पे गए, हाइट आ जाएगी 3। नाउ राइट हाइट, नाउ गो टू द राइट, 1 3 हाइट इक्वल टू 2, ठीक, हाइट इक्वल टू 2 अगर डिफरेंस आ गया, नॉट परफेक्ट नहीं है। नाउ कौन लेफ्ट हाइट हो जाएगी 1 4 3, राइट हाइट हो जाएगी 1 4 और 7, तो 3 इक्वल है, इंटायर ट्री परफेक्ट हो जाएगा। और वो जैसे कि राइट साइड में भी नोड होता था, कॉमन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बाइनरी ट्री है, राइट मोस्ट राइट की इक्वल हो जाती है और फिर फ्रॉम लेफ्ट द राइट मोस्ट पाथ रीचेस आइडिया। I think this should work. Okay, now see the one thing I think this can happen. I have can I open this another? Oh, I can't open this here. Okay, I can save this image. Okay, then I can open it. Okay, now observe the pattern. Okay, now if I have 1 and 2, okay, now there's one question. If if I say if it is a binary tree and perfect binary tree, and here it is 7. Okay, can you calculate how many nodes the tree have? 1 2 3 4 5 6 7. Okay, can we make formula for this? Yeah, means if I ask you the height of the tree is 3, then how many node it will be? The height, the node total number of node will be 2 to the power 3 minus 1 means 8 minus 1 equal to 7, and here we have the 7 nodes. Okay, so if I say the what is the left height of the tree? Left 1 2 and 3. Okay, so the left height of tree is 3. Okay, I say left height of 3 is 3. What is the right height? Means go inside the depth
from right means first we go 3, the right no one, then we return the 1. The right height is 2. Okay, 1 and 1 2 and left height is 3. This is not equal. It means what we can do, the left height is 3, right height is 2, then the answer will be 2 to the power h. The maximum of it means 3, means 2 to the power 3 minus of 1. Okay, 2 to the 3 minus 1 7, but what we will do, we will minus 2. Okay, we will minus 2. Now if you observe that in a complete binary is filled from left to right. Okay, so there is no chance that 2 doesn't have any child, or it have one child only 4, it doesn't have 5. There is no chance. The chance of having uh, the chance of having no child, and that is for the right child of 1, means that is 3. Okay, so what I can say, I can say here, okay, but I have to calculate the height of the left subtree and height of the right subtree. Now height of the 4, calculating the height. What I'm calling the left, it will call the left, it will call the left tree. The left, and it will go on left, and the height of the left. Will go on left and calculate the height of the tree. Height it will go right and find the right side. Okay, it will go right and find the right height of the tree. Okay, now I can say if left height and right height is equal. Okay, if L equal to R, or if L equal to R, it means the complete boundary is a perfect complete boundary. It means the last node also have the one children. So answer will be 2 to the power h minus 1. It means 2 to the power h left shift of 1 of h equal to 2 to the power h. You know, I think between equation you also know 2 to the power h minus 1. If it doesn't equal, okay, it means we have to return the 2 to the power h minus 2. Okay, now we have to write the height function here. Okay, node root. What we are writing here, we are writing ओरिएंटेशन पे भी ध्यान दे लेते हैं यहाँ थोड़ा. ओके, फुल लेफ्ट के लिए आई थिंक अलग फंक्शन लिखना चाहिए को राइट के लिए अलग. ओके, एल आर, ठीक. यहाँ पे लेफ्ट हाइट के लिए और राइट हाइट के लिए तो रूट इक्वल टू नल हो जाएगा. तो रिटर्न कर देंगे 0. बर्नर लेफ्ट में रिटर्न क्या करेंगे अपन, लेफ्ट हाइट है उसकी, लेफ्ट हाइट और रूट का लेफ्ट ही डालते जाएंगे उसमें. ठीक,
रूट का लेफ्ट डाला, रूट का लेफ्ट रिटर्न कर देंगे 0 और वन रिटर्न कर देंगे क्या 1 प्लस रूट का लेफ्ट। ओके, यहाँ से 1 आ जाएगी, 1 आया और यहाँ से आ जाएगी क्या 1 प्लस। ठीक है, नाउ सेम फंक्शन फॉर रूट ऑफ राइट। ओके, फॉर द राइट हाइट if I say root run then root of left की जगह पे right. I think this should work. Please, please, this should work. Oh, H. It means. Oh my God. I can say left equals to right. Then L. If it is not equals to right, okay, then L means left height minus. Always left height will be greater. Okay. Pointer. Okay, left height root left because the root of left इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अगर नल है what do you have to do, return 0. ओके, if रूट का लेफ्ट नल है, रूट का लेफ्ट इक्वल टू नल है एंड रूट का राइट। ओके, रूट का लेफ्ट ना रूट का राइट रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 1. ओके, दिस विल नॉट पास आई थिंक. Oh, first test के 3 wrong and second and third is good. The answer is 2. What? 2? Okay, then let's try on this. 1 and 2, 4 and 5 and 3 and 6. Okay. If I am here at the 1, if I call it for 2, okay, I'm going, okay. First two condition neglected and height for calling left. Okay. If I am here left height root equal to none, no. Then call 1 plus, then call 1 plus left वाली height of root का left means. Okay. Now I am here at 2. If it is null, no. Then what I will do? It will call 1 plus. Okay. It will call 1 plus 4. Okay. Now if I am here 4, it is null, no. Then what it will do? It will call 1 plus null. Okay, null. If it is null, return 0. Okay. Return 0. Okay. 1 plus 1 plus 1 equals to total 3. Okay. From here left I got 3. From right 1 plus root of right. Here what we will do? 3. If not, return 1 plus root of right means 3 or equal to 0. 1 plus. Okay. 1 plus 3. 1 plus 3 के लिए now 1 plus 3 will call it right. So 1 plus null and it is equal to null. Then it will return it 2. Okay. This is 3, this is 2. It means it is not equal. L not equal to right. Okay. If L is not equal to right, it means I have to calculate 3 and this is 2. So I can calculate 2 to the power 3 means 8 minus 2 to the power 2, 9.
means minus 2, but which is 6. 2 to the power 3. 2 to the power 3 means 1 left shift L times. 1 को left. Oh, that's one mistake. I think, but I have to find the mistake. Bit manipulation. Find the power. Left shift, right shift, left shift, right shift, left shift. Okay, 1 and because of a performing the left shift 1 by n. 1 को n times to 2 raised to the power of n. 1 को n times लेफ्ट शिफ्ट करना है. Okay. तो 1 को मैंने l times लेफ्ट शिफ्ट किया तो क्या रहेगा 2 to the power l. और लेफ्ट 2 to the power 3 minus 1. 2 to the power 3 minus के 2 to 8 minus के 2 and that is 6. I am wrong. Okay, I think this will return true. Okay, height of left, 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 right, right, right. Okay, root, root, L, R, L, L, R, R. I think it is in that root. No, what I'm getting 2. But how? If it is equal, can I return L, return R? Okay, it will return the R. So it should return value of R is 2. R is 1. Value of R is coming out to be 1. But how? In tree root R equal to return 0. 1 plus I find the mistake. Here I have to write the R height. Okay. Now I can say 1 left shift S times. No, 1 L shift L times. 1 left shift L times. And here I have to subtract 2, or here I have to subtract 1. Okay. Now this should pass, I think. Oh, hi. Hi, what? R 1 plus R height, okay. Or 1 plus left height. R equal to null, letter 0. R equal to, okay, if root equal to null, then it is if root equal to null, it means I have to return 0. Okay. Now if root equal root left null and root right null, then return 1. Root left null and root right null and return 1. Okay. If I say it is returning 1 now, no, it is returning 2. If left is 2, if left equal to right, so 1 to the power L minus 1. Okay. Total number of node. Okay, let's see why this is happening. Here I am returning L. No, here I am returning L. Here I am returning R.
I have to find the value of L and R first according to what is happening, what is coming in. The value of L is 2 here. Now for code R. Now according to this code, the answer will be okay. Now my code is giving L equals to 2 and R equals to 1. It should give L equals to 3, R equals to 2. Means there's one mistake, I think, for returning type. Okay, if L equals to null, then return 0. Collect L oh my god, I understand it, I understand it, I understand. I have to pass the root for both functions. Okay. Oh my god. How can I do this mistake? Now that should correct. Okay, now that will be correct. Okay. Now 1 left shift L times minus 1 for perfect binary and for uh, complete binary, but for if there is less than 2 nodes in a of 3 means 3 have only 6. Okay, I can write 1 modulo left shift L times minus I can write 1 L times minus of 1 and that becomes 2. Okay, now I think that should work. Hi, algorithm is correct and failed to handle the recursive case incomplete, returning a constant value at line number 38 instead of recursive. Why this is happening? Creation failed to handle the recursive case for incomplete subtree. Incomplete subtree, how this will? It gives 2 time pairs. I submitted 2 times, but it's giving restriction pair. But why? What will be the time complexity? Separate calculate the time complexity over. Okay. What will be the time complexity? To calculate the time complexity. Okay, the overall time complexity of algorithm of h square. H is the height of the tree. For a complete binary tree, this is simply 2 order of L or n is the total number of nodes. Current implementation contains logic bug that prevent it from correct counting nodes. Why bug? Left height only goes down the left moved path taking order of n time. Only goes down right moved path. ठीक है. मेरे function equal left right 1 inside the function which take order of s time. Since there is no recursive call to count nodes, count to no the function and exactly one thing. Total time order of n. For a complete binary tree, height equals to log n. As the execution time is log of n. If you intended to fix the logic by adding recursive steps, correct standard divide and conquer with some run order of time. While it calculates order of log n height at each step in order of n deep recursion. Algorithm means that L not equal to other tree is missing nearly one node from being. This is incorrect. We complementary can have bottom loop filter. Oh my god. Something. Now see that test case. 1, 2, and 3, and 4. Okay. Now if I calculate the left height of the tree and that will become 1. If I calculate the right height of the tree that becomes 2. The total number of node in one night the complete binary will be 2 to the power 3 minus k2 means 6. But here the total nodes is 4. The logic fails. Okay, actual count equals to 4.
your code logic 6. Okay, how to fix? No. To fix this bit manipulation, body size properties, you must recursively check to subtree when L not equal to R. Subtree is perfect equal to R. You can use it with manipulation to skip context mode individually. If L is not equal to R, okay, if left height is not equal to right height, left height is not equal to right of height. Count to Boundary properties. You must recursively check the subtree when L not equal to R. अच्छा, जब एल आर के इक्वल नहीं हो तो हमें उसको रिकर्सिवली चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे एल आर के इक्वल नहीं है तो हम रिकर्सिवली चेक करेंगे। पहले तो उसके लेफ्ट में इसमें चेक करेंगे टू के लिए, ठीक। तो टू के लिए लेफ्ट हाइट राइट हाइट के लिए कैलकुलेट किया। टू में कितने नोड आ जाएंगे? टू के लेफ्ट में और टू के राइट में, ठीक। तो टू के लेफ्ट में आ जाएंगे, राइट में कितने? लेफ्ट में आएंगे 1, राइट में 0। तो 2 टू द पावर 1 माई इक्वल नहीं है तो यहाँ पे आ जाओ फिर से, ठीक। तो फिर से आने पर हम देखेंगे यहाँ पे 5 1 2 3 होगा, 2 1 लेफ्ट काउंट किया, लेफ्ट 4 और 5 का लेफ्ट किया, 4 और 5 का 4 भी किया, नल है तो लेफ्ट वाले काउंट किया, नल 0 0 तो 0 आ जाएगा यहाँ से 1। हाउ टू कैलकुलेट? ओके, how to calculate and for to find the leftmost depth. I find that while note height plus और note के लेफ्ट में लग जाए, ये लेफ्ट हाइट से हमने फाइंड कर ली, ठीक। और ओपन टाइम में नाउ हेल्प टू फाइंड द राइट मोस्ट डेप्थ, यहाँ से राइट मोस्ट डेप्थ भी फाइंड कर लेंगे, ठीक। काउंट नल रिटर्न 0, लेफ्ट कर दिया इक्वल टू राइट आ जाएगा, तो हम करते हैं 1 प्लस लेफ्ट के लिए और राइट के लिए मीन्स 1 प्लस यहाँ पे जैसे 1 2 4 और 3, okay, 1 2 4 3. Here we have, oh, I understand. Okay, let's see for this example. Okay. Now see, if I have 1 2 4 1 2 1, the left child 2, right child 3. Now I have another node and which is the 4, and that is the left child of the 2. Using the example, I can first take that example. Okay, take that example as a example में कहाँ पे खोले? ओके, यहाँ पे खोल लेता हूँ, ठीक। take that example, ठीक। Now see that example. If you have 1, then 2, then 3 and 4, our code will, our algorithm will be wrong. Okay. Now, if I calculate the height of left subtree and right subtree at each node, okay, if L is not equal to right, then what I will do? I will calculate, go for left and for right. Okay. I am here. If I calculate for 1, okay, if height is not equal to, what I will do? I will count for left means 2 plus 3. Okay. Now for 2, if I go 1 and not equal to 2, I will go for 4. I will go for 4, 1 plus
left plus right, 1 plus 4, right not right एग्जिस्ट नहीं करता इसका ठीक। ना आपको थ्री थ्री के लिए कुछ एग्जिस्ट नहीं करता तो वहाँ पे हम जाएंगे नहीं ठीक। 1 प्लस लेफ्ट में न्यूट में जीरो राइट में जीरो आ जाएगा ठीक। 1 प्लस यहाँ पे 4 में जाएंगे ठीक। तो 4 कहाँ पर जाएगा लेफ्ट में जाएगा 1 प्लस 4 अपने लेफ्ट में जाएगा तो 1 प्लस जीरो ऑलरेडी जीरो था और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 प्लस 1 प्लस 5 इक्वल टू 4 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ मिनट्स ओके। नाउ look at this example and okay L is not if L is not equal to R then what I will do I will go in left then go in right then add that left and right okay I am drawing on my copy then I will show you okay now I have 1 plus left and right okay if I have 3 1 2 3 and 4 okay now the 4 1 okay 4 1 L equals to 3 R equals to 2 L is not equals to R okay L is not equal to R it means we have to apply this okay now for 1 plus count of 2 okay or count of 3 okay now for 2 and 3 if I am here count of 2 I will check here if the left height L is not equal to R for count of 2 L is not equal to R okay it is simply like L is not equal to R it means we have to 1 plus count of 4 plus count of 3 no right children means count of null okay plus I have to count of 3 for count of 3 there is no left sub 3 and right sub 3 so I will do 1 plus count for null and plus count for null okay now okay 1 plus count for 4 there is no left subtree and right subtree for 4 I will do 1 plus null वो काउंट ऑफ नल तो जीरो ही हो जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस जीरो इट मीन टोटल आ जाएगा आंसर 4 ओके नाउ आई एम डूइंग दिस ओके आई एम शोइंग टू यू दिस क्वेश्चन I try on my copy okay I send it on my phone now see where WhatsApp gone okay look at the example okay if I say you have open with photos okay it should open okay if I have why is happening this now see this okay if I say
If L is not equal to R, means the height of the left subtree is not equal to height of the right subtree. It means there is extra node in the left subtree. Or you can also look at this. Look, here we have 4, 2 and 1. Means height of left subtree is greater than the height of right subtree. So I can apply this. Okay. The formula for this is 1 plus count of left and count of right. But means every time we recursively count the left sub the height of the left subtree and right subtree. Okay. The total height will be left subtree height plus right subtree height plus 1. Okay. Now see, for 1 the root left equal to 3 and right equal to 2. Okay. L is not equal to R. It means we have to follow the this root L not equal to R. Okay. If you concentrate here, I write on this example, and that is 1 plus count of left means the left child is 2, means count of 2, right child of 3. Okay, count of 3. Now 1 plus, for count of 2 again we recursively call the function, and that is for 4, means 1 plus count of 4 means 1, or right for right children count of null. I write the count of null, or there is no children of 2. Okay. Now, if I say for count of 3, is there any children of count of 3? No. What I will do, I will recursively solve, means 1 plus count for null and 1 plus count for null, means left subtree. I write the null for left subtree and here for null for right subtree. Okay. Now, here we have 4. Now, 1 plus count of 4 means the I recursively solve for count for 4. Okay. Is there any right children or left children? No. I will write 1 plus n for left children and n for right children, means null. I will, or I can also write 0, but I am not writing here. Okay. Now I write for count of n equal to 0, count of n equal to 0. Okay. So 1, then 1, then 1, then 1. Total 1 equal to 4. Means total number of node in this complete one is equal to 4. Okay. Now I can let one, I can do one thing in here, one thing here. Okay. If L equals to R, then return 1. If L not equal to R, then I can do one thing. Okay. I can return 1 plus count root collapse. Okay. Count root right. One mistake here. Okay, root left and root right. Now I can say if the root equals to 0, if root left equals to null, if root left equals to null. Okay. Root left equals to null, right equals to null, and return 1. I can say that will all, that should work. I think that will work. Running the test cases. Okay, that will be the last question for today. I means last question for that stream. Count likely code calls different function count. Oh my god, here I have count and OTS count nodes. That's why first I have to run then submit. What I don't know. The flip is on. Okay. Now this will work I think. Why?
many errors in my code, bhai, but I don't know. Oh, that will work, I think. Should work. Oh, yeah. That work. Now I have to submit this on GitHub. Okay, that's all for today. Should I continue or not? I don't know what I think I should continue what after break. I'm coming. I'm coming after 5 minutes. Okay. Then 5 minutes timer I can open. Okay. Coming.
I'm back. One last question. One last question. I think we have marked this question. Time one, total of complete binary. The comment needed to construct a unique binary. Now the requirements needed to construct a unique binary tree. Now requirement needed to construct a unique binary tree. Okay. To construct a unique binary, you need in-order traversal combined with either a pre-order traversal or a post-order traversal to make a single unique tree. Why this combination of in-order plus pre-order? Pre-order lets tell you the root node part, and in-order lets show which node goes left or right. Sorry. तो in-order traversal और post-order traversal कंबाइन करने के बाद हम यही रिक्वायरमेंट इसकी ओके in-order traversal और post-order traversal ये in-order traversal ये है post-order traversal इससे हमें क्या करना है बानी सर्च ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है कंस्ट्रक्ट बानी सर्च ट्री फ्रॉम प्री-ऑर्डर एंड इन-ऑर्डर ये रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली है बट आई थिंक एक बार पढ़ लेना चाहिए रिक्वायरमेंट नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ यूनिक बाइनरी टफ पे पढ़ो ना भाई टफ पे क्या है रिक्वायरमेंट गिवन इट ट्रेवल रिक्वायर्ड प्री ऑर्डर एंड ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर और बाइनरी ट्री टास्क क्या है डिटरमाइन करना विच पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट यूनिक बाइनरी फ्रॉम दी the importance of uniqueness while constructing a binary. Unique is important because it specifies that there should be a single distinct singular element of a node within tree. Unique binary tree means there is only one possible tree structure that matches the given traversal sequence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Count as continuous slow fast. Step 1 1 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Without unique binary specified, there might be multiple tree structures that could correspond to the same set of intervals as shown above.
making it harder to determine the single valid tree. We will now explore scenario where pre-order, post-order, and order tables are given two at a time. Scenario 1. Pre-order and post-order table. But we have given pre-order and post-order traversal. Okay. For the pre-order traversal, pre-order means first the route will come first, then left children, then right children. Okay. The route is I'm coming. Okay. Someone there, I think. Okay, okay, wait for a second. I'm coming over. Okay. Don't first come over. Then you can look at this. Not any kind of study. I think only cultivated structure. Okay. With the pre-order traversal. Pre-order traversal 1, 2, and 3. It means the root, then left, then child. Okay. Root 1, then left 2, then child 3. Tick. Now post order. First left. Okay. 3. One root, left, then right. One root, then left. Pre-order traversal means first root आएगा, then left, then right. ठीक. पहले root, then left. ठीक. Then right. First two. पहले root ठीक. इसका आएगा left, right का root. लेफ्ट राइट और फिर तो वन फिर इसकी लेफ्ट होगा ठीक इसके राइट होगा फिर उठाएगा 3 2 देन 1 ओके नाउ प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रैवल प्री ऑर्डर ट्रैवल सर 3 9 20 15 7 in order 9 3 15 20 and 7 pre-order always root come first okay it means 3 is root now I have two options in order the I 3 is root, then in order the left value of 3 will be the left sub 3, the right value of 3 will be the common right sub 3. Okay? Now 9 will come in left sub 3 and 15, 20 and 7 will come in right sub 3. Okay? Now pre-order and in order traveler. Now 3, if 9 is fixed here and 15, 20 and 7 is here. Okay? Now I have to find the import retrieval. Okay, now 9.
Wait. I have 9, so I fix the 9. Okay, now I have 20. So right side tree will be the 20. Now search for 20. Okay, so 15 and 7. 15 will be accept node and 17 will be the right node. Okay, 3 left is 9, right is 20. Okay, I think I understand. Okay, so we ending our stream. I think no one watch live during that stream, but I watch. Thank you and bye bye.